Hello, everybody. So this session is about SSL TLS handshake process. So it is very, very, we can say important to understand if you are working as on the devices like F5 or Palo Alto or Checkpoint or other vendor. It is very, very important to understand the process like SSL TLS handshake process. SSL is not now call it is like TLS transport layer security. SSL is secure socket layer. So this session is basically about that, and I'm going to keep very short session, guys. मैं पूरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा लाइक इन केस लाइक इन द बैक एंड बट मैं आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट सिंपल so that आप understand करो and same things you can give answer in the interview, so that is only important. This process happened the back end guys, so don't worry about it, and I will try to show with the help of wireshark also. Okay, so like how SSL TLS handshake process work, guys. Let's consider this is our let me just yeah. So this is our client, guys. Let's consider this is the client. And sorry for my handwriting. And this is the client. And this is the server. Okay. This is the server, guys. Let's consider this is the server. Okay. So what is the first step, guys? So first a step client send uh, like option, SSL option for negotiations. Okay. SSL option for negotiation. Okay. So when client send SSL option to server for negotiation, it's include like a list of cipher source, random number, and some other parameters. अभी के लिए आप इतना ही जानो, and I'm going to show you on the Wireshark also, so don't worry about it. And then in second step, server is going to be agree with like SSL option, जो भी cipher source का list था उसमें से it is going to pick someone like one जो सपोर्ट करता है सर्वर. सो SSL agree, we can say SSL option agree by server. SSL options we can say like agree by a server, and apart from that server is going to send like certificate, guys, and certificate including the public key and private key basically, guys, not share. प्राइवेट की जो होता है वो एक दूसरे के पास रहता है, like in client server is not going to share it. Okay. So now the third step, guys. What is the third step? So in third step, client is going to validate that certificate, validate, validate the certificate. Okay. And after that, it is going to create a session key, guys. Session key. Session key, and this session key will be encrypted with the help of public key which is shared by the server. So क्या रहेगा, guys? ये public key से क्या होगा, ये encrypted रहेगा. Okay. And I'm going to show in the Wireshark also, तो थोड़ा सा वहां पर और आपको clarity होगा, so don't worry about it. And then this session key basically used for the our communications, like like all the communications will happen, and we are going to encrypt and encrypt decrypt with the help of session key which agree by server and the client. So now other communications begins from here. So this is SSL negotiation, SSL TLS negotiation in between client and server. It is very short, very simple. Okay. Now let's come to the Wireshark, guys. So if you see here, after three-way handshake, so if anyone asks in the interview, like if you're searching anything on the browser like www.facebook.com, so what is the first step? So first general DNS lookup happen, and after DNS lookup happen, client is going to send the request to the IP.
like for example www.facebook.com, it binded with for example 10.01.69. So now client is going to send the request. So after in DNS lookup happen, three-way handshake happen, like seen, ACK in between client and server. And then SSL handshake happen, then actual communication, actual application data communication happen, guys. So this is how all the process happen in the backend. So we should aware, and these types of questions generally asked in the interview also. Okay, so this is the client hello, guys. So अगर आप first option देखते हो, तो if you come to transport layer security, let me just put on top. So if you come here, this is the transport layer security and it is using TLS version 1.2. So मैं यहाँ पर कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ. Handshake protocol, it is using client hello, and there's some random number, session ID length, cipher source length 42, and this is the list of cipher source, guys. It is sent by the client. और cipher source क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, guys. So cipher suit is the combination of the like encrypting, authentication, and integrity. So अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है, so we can tell like the cipher suits is the combination of encrypting, authentication, we can say, and integrity. Okay, and it is used in the protocols like TLS, transport layer security, and SSL secure sockets layer. Okay, so I hope कि आपको एक क्लियरिटी हो गया होगा कि व्हाट इज साइफर सूट इज a combination of encryption, authentication, and integrity. And this is the example of, guys, जैसा साइफर सूट रहता है, जिसमें इसमें टीएलएस जो इंडिकेट करता है द प्रोटोकॉल बीइंग यूज, एंड जो ECDHQ होता है, guys, this is the डेफी हेलमन. इट इज यूज फॉर द की एक्सचेंज मेथड इंश्योरिंग सिक्योर की एग्रीमेंट. एंड गाइस जो AES होता है, इट इज गोइंग टू यूज फॉर द इंक्रिप्शन पर्पज. एंड जो RSA होता है, इट इज गोइंग टू यूज फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पज, लाइक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम. सो आपसे अगर पूछे RSA, दैट इज यूज फॉर दिस इज एसिमेट्रिक एल्गोरिथम्स. सो यहाँ पर RSA यूज होता है ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए. ES256, इट इज गोइंग टू यूज फॉर इंक्रिप्शन पर्पज. And size basically is hashing algorithm, basically used for the integrity of the data, provide integrity of the data, like whatever communication happening between client and server, there is no any change in the middle of that data. उस पर्पज के लिए हम हैशिंग यूज करते हैं, गाइस, टू प्रोवाइड द इंटीग्रिटी. और GSM जो होता है, गाइस, इसमें मोड ऑपरेशन होता है फॉर इंक्रिप्शन, like ensuring both confidentiality and integrity. So GSM जो होता है, it is used for the operation for encryption. It is going to be ensuring like both confidentiality and integrity, guys. Okay, so how it works, guys. So the client and server negotiate the base cipher suit जो मैंने आपको बताया, SSL option first part वाला है, in step 1. And then they perform key exchange using DeFi element to establish a secure session key. उसके बाद में second step में क्या होता है, guys, कि key exchange होता है to create secure session key and with the help of DeFi element. And then authentication hota hai, guys, to ensure the server is legitimate using its RSS certificates. Then third step में क्या होता है, authentication होता है, like whatever communication I am doing, that is the genuine guy, उसके लिए हम authenticate करते हैं. Okay, whatever people in front of me, the people who I am talking is the correct people. Okay, guys. And then data is encrypted with AES-256 or maybe other bits. This is the 256 bits, guys. And in GSM mode of security, it's provide like confidentiality and we can say like confidentiality, integrity. And then size basically used to data integrity, preventing tampering. So it is going to be provide like there is no any change in the middle of the data. So this is how it works. So I hope कि आपको ये सिंपल शॉर्ट में क्लियर हो गया होगा कि कैसे SSL नेगोशिएशन होता है इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. इट इज वेरी 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 सिंपल एंड शॉर्ट. मैं आपको वेरी सिंपल शॉर्ट में बताया. ठीक है, अब आते हैं कमिंग टू द आवर कैप्चर, गाइस. सो ये साइपर शूट्स था जो मैं आपको बताया, क्लाइंट ने सेंड किया. उसके अलावा अदर थिंग्स सेंड बाय क्लाइंट ऑल्सो, गाइस, जो कि आप वन बाय वन ओपन करके देख सकते हो, लाइक कंप्रेशन मेथड एंड देन अदर एक्सटेंशन लाइक सर्वर नेम, लेन, सर्वर नेम, सर्वर नेम indication extension, server name length, server name, this is the IP of the server. So everything, these are the details sent by the client hello. अगर उसके बाद में आप आते हो, गए अगर आप सर्वर हेलो में आते हो, तो सर्वर इज गोइंग टू बी, सर्वर क्या करेगा, इट इज गोइंग टू पिक एनी वन. देखो इसमें जितने भी साइपर शूट था क्लाइंट्स ने सेंड किया, ओनली पिक्ड बाय वन. सर्वर ने इसको एग्री किया, दिस वन इज सपोर्टेड बाय सर्वर.
ओके, सो बोथ आर एग्री विथ एसएसएल नेगोशिएशन। उसके अलावा सर्वर क्या करता है गाइज, इट इज गोइंग टू बी सेंड द सर्टिफिकेट ऑल्सो। दिस इज द सर्टिफिकेट्स, ये देख लो सर्टिफिकेट सेंड करते हैं, सिग्नेचर इनक्रिप्टेड, एंड उसके बाद में की भी रहता है गाइस। अगर आप एक्सपेंड करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लाउड शार्क सर्च करना है, एसएसएल क्लाउड शार्क, और वहां से आपको ये पीके मिल जाएगा। ओके गाइस, so these are the details in the step 2 that is sent by the you know server. And I also want to show one more thing, that is fine. Length, this is the length handshake protocol certificate algorithm. And if you come here, layer 2 handshake protocol server, hello. And one more thing I want to show here guys, just 1 minute. Session ID length, and perfect, cipher suit extensions, renegotiations, extension sessions, length. Okay, and one more things, somewhere we'll see the key also, so don't worry about it. So this is the client, the server hello, including certificate. And then after that guys, आप अगर यहाँ पर देखो देन क्लाइंट क्लाइंट की एक्सचेंज, वहां पर क्या करता है क्लाइंट गाइज, इट इज गोइंग टू जनरेट लाइक प्री मास्टर सीक्रेट की, एंड उसके बाद वो लोग विद हेल्प ऑफ सम अदर मैकेनिज्म, यू कैन से लाइक रैंडम नंबर मास्टर सीक्रेट की, दे जनरेट सेशन की, एंड बोथ सेशन की इज गोइंग टू बी यूज फॉर द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, सो आपको ज्यादा उधर कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, बस इतना अंडरस्टैंड करो। And then if you come here, this is the handshake protocol client key exchange guys. And यहाँ पर देखो प्री मास्टर सीक्रेट की का लेंथ 128 है, एंड इनक्रिप्टेड प्री मास्टर सीक्रेट की, एंड दिस इज इनक्रिप्टेड विद ऑल पब्लिक की, जो कि सर्वर द्वारा सेंड किया गया है, एंड सर्वर इज गोइंग टू बी डिक्रिप्टेड विद हेल्प ऑफ इट्स प्राइवेट की, बिकॉज सर्वर के पास जो प्राइवेट की वो शेयर नहीं हुआ था, ओनली पब्लिक की शेयर हुआ था। ओके, उसके बाद में गैज क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में बहुत वाइडली पूछा जाता है कि व्हाट इज चेंज साइफर एस्पेक्ट प्रोटोकॉल्स, व्हाट इज, ये एसएसएल हैंडशेक के पहले आता है और बाद में आता है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एनी वन कैन आस्क इन द इंटरव्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, वी कैन टेल लाइक चेंज साइफर एस्पेक्ट प्रोटोकॉल्स कम आफ्टर एसएसएल हैंडशेक। ओके, आफ्टर एसएसएल हैंडशेक ये चेंज साइफर एस्पेक्ट प्रोटोकॉल आता है, एंड इसका मतलब ये होता है कि नाउ फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड्स वी आर गोइंग टू now begin our communication as encrypted, and we are going to encrypt decrypt our communication with the help of session key we have generated with the help of agree, both party was agree, and that key is going to be used for our further communication, and further communication will be encrypted. So ये chain cipher respect protocol का meaning होता है, and it will come after SSL TLS handshake guys. Okay, so it's very very widely asked question in the interview. ठीक है गाइज, उसके बाद में देखो ये न्यू सेशन, आप इसको भी पढ़ सकते हो, इसमें क्या एग्री हुआ, लाइक हैंडशेक प्रोटोकॉल न्यू सेशन टिकट, कंटेंट टाइप हैंडशेक वर्जन, एंड देन content type change cipher aspect version, both are agree basically, change cipher aspect message, both are agree basically guys. And then after that, this is the application data, actual data is sent, and that is encrypted application data, this and that, this is in encrypted guys, length 400, version TLS 1.2, type application data, and encrypted applications, and that it will only decrypt with the help of session key, which is generated between the client and server. So this is the SSL TLS handshake negotiation in very short, simple. I hope guys this session is informative and knowledgeable for everybody. So if you like my efforts, please share this channel, share this video to your group, because the things I am teaching here, because I have started F5 LTM series, so ये सब सारी चीजें हमें F5 LTM में जानना चाहिए। तो after high availability, I am covering this some like HTTP methods, like SSL handshake, TLS handshake process, how it's work in the backend. Then I'm trying to upload next session about H8 troubleshootings. Then we'll cover some automation part. Then we'll cover all the other remaining topics content which is remaining in the F5 LTM. So जितना ज़्यादा हो सके अपने सर्कल में शेयर करो. The people who is searching good content in free, it is totally free guys, you don't need to pay any things. And जितना ज़्यादा हो सके अपने सर्कल में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. Let's meet on the next session.
Thanks for your time. Thanks for joining, and have a nice day ahead, guys.